post. Many of the leaders of the NCP are here. If live visuals can be seen, Sharad Pawar can be seen having an emotional talk with his party cadre, basically telling them to go home. Tomorrow is going to be a very crucial day for the NCP party. That is when a meeting of the committee that has been formed to decide about NCP's future is going to take place. Basically, the meeting will be about the 18 members in the committee are trying their best to convince Sharad Pawar to take back his resignation. But if that doesn't happen, then there will be they will have to decide on other alternate course of action. Basically, what are the options available? That also, if we can discuss briefly. One option will be that Sharad Pawar remains the party supremo and a working president is appointed in that case. Another option can be a dual kind of a leadership can be appointed if Sharad Pawar does not want to get into any post with the NCP. Dual leadership will be Supriya Sule handling Delhi, Ajit Pawar handling Maharashtra. Now, here as well, if you can see the visual with me, my video journalist Vinayak is showing you. This is Rohit Pawar as well. We are live. Rohit Pawar ji, one simple word we would like to take from you. How does the party cadre feel? How you, as somebody from Pawar family and MLA from NCP, how do you feel? But we are live, please. No comments. So this was Rohit Pawar. He's saying that no comments. But yeah, there are many other leaders. Midkari ji also here. आप बताओ कि आपको क्या लगता है जो हो रहा है? पवार साहब का अपना रेजिग्नेशन वापस लेना चाहिए, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं. बट अगर वो नहीं लेते तो फिर अजीत पवार या सुप्रिया सुले क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? No comments. Okay, so nobody basically here is willing to speak, but these are all leaders who are waiting to see the top boss Sharad Pawar speaking to his party cadre, and it is a kind of an emotional talk that Sharad Pawar is having with his party leaders. Many of them have come from different parts of India as well. The chief of the NCP from the different states have also here trying to convince Sharad Pawar to take back his resignation. Many the leaders of the NCP, basically Jitendra Awad was also saying that there have been calls from several opposition leaders asking Sharad Pawar to take back his resignation, saying that Sharad Pawar will be very crucial ahead of the 2024 battle, that is the Lok Sabha election. He is the one who can unite the opposition against a strong ruling force, that is the BJP. Story hasn't moved forward really. If we talk about how there is an attempt on part of the NCP leaders, several of them are only to pacify Sharad Pawar, to take back his decision, to reconsider his decision. Sharad Pawar in the meanwhile looks like remains firm on what he's decided already, but the story certainly has changed on the aspect of how there are speculations now that Mr. Pawar has taken this decision because of a section of NCP leaders who were about to join संदीप तेरा मोबाइल पीछे जो काही निर्णय घेतला तो पक्षाच्या भवितव्यासाठी घेतला. उद्याचं पक्षाचं काम कसं चालावं आणि अविरोध जोपर्यंत भक्कम झाला त्यांच्या मागोवर त्यामधून नवीन नेतृत्व हे शक्तिशाली करावं हा त्याच्या माध्यमाचा हेतू होता. ही गोष्ट खरी आहे की असे निर्णय घेताना सहकार्यांच्यावर विचार निर्णय करण्याची आवश्यकता असते. मी त्याचा विचार केला, पण मला एक खात्री होती की मी तुम्हा लोकांशी चर्चा केली असती तर तुम्ही मला कधी होय म्हणणार नसता. When we take a certain decision, it's done with a lot of thought after having consulted several people. तुम्हाला विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायची आवश्यकता होती ती माझ्याकडे घेतली गेली नाही. पण त्याचा हेतू काय होता हा मी तुम्हाला सांगितलं. आता हा जो निर्णय घेतला आहे त्याच्यासाठी महाराष्ट्राच्या बाहेरनं सुद्धा अनेक तुमचे सहकारी या ठिकाणी आले. माझ्याशी उद्या त्यांना बोलायचं आहे. माझी त्यांची बैठक उद्या संध्याकाळपर्यंत होईल आणि ती झाल्याच्या नंतर जे काही तुम्हा सगळ्यांची भावना आहे ती नजरेसमोर ठेवून
बाहेरून आलेल्या सहकार्याला विश्वासात घेऊन It appears that Mr. Sharad Pawar is asking his protesters to wait until tomorrow evening. Udya Sandhyakali is what he said, which translates into tomorrow evening, where there could be a meeting held to chart the way forward for the NCP. ही दुर्लक्षित केली जाणार नाही एवढंच या ठिकाणी आता सांगतो. 2 दिवसाच्या नंतर तुम्हाला असं बसावं लागणार नाही. So Mr. Sharad Pawar saying that I hope you don't have to protest like this once again over the decision that I've taken. Well, let me go back once again to Arunil. Arunil, there were celebrations among the protesters who'd gathered around Sharad Pawar. What did he announce right at the end of that speech that he gave? Well, that end of Sharad Pawar's speech to his party cadre was very, very significant. What basically he said was that you have come from all parts of India, you have come from different parts of Maharashtra, your emotions, your pleas will not be completely ignored by us. We are going to decide by tomorrow evening. That is what Sharad Pawar basically said when he was speaking to his party workers. We can expect Sharad Pawar to leave from YB Chavan Center anytime soon. Now you can see the party cadre also started celebrating after Sharad Pawar basically made those statements. The statements again I will repeat were, आप बताएं कि आप खुश हो कि शरद पवार जी कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है. उन्होंने ये कहा है कि 1-2 दिन के अंदर मेरे सहकारी जो बाहर से आए महाराष्ट्र के उनसे चर्चा करके मैं ऐसा निर्णय लूंगा जो आप लोगों को फिर यहाँ पे बैठने की जरूरत है. So this gentleman Yes. he can't speak because he's been protesting over here, but he said that Sharad Pawar has told the party cadre that you have been protesting here and your sentiments, your pleas will be considered when I make my decision, and the decision can be expected by tomorrow evening. That is what Sharad Pawar has said. Now we are coming to these visuals of the car of Mr. Sharad Pawar. He's been leaving from the YB Chavan Center. You can see Sharad Pawar leaving from YB Chavan Center for his residence at Silver Oak, and the party cadre, party workers who have assembled over here. We'll try and speak to some of the other party workers as well. आपसे बात करेंगे. आप इनका आवाज बेटा है. आपसे बात कर. We'll try and speak to some more party workers who have assembled over here. आप बताएं कि आप कहां से आए? शरद पवार जी ये बोल रहे हैं कि आपकी जो भावना है उसको इज्जत दी जाएगी, उसको भावनाएं समझी जाएगी, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे. मैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से हूँ. मेरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रदेश सचिव पद है. तो मैंने कल रात को पवार साहब को मेरा राजीनामा भेज दिया है, जयंत पाटिल साहब को भेजा है. तो हमारी 187 लोगों की बॉडी है राष्ट्रवादी की, उनमें से 120 लोगों ने कल राजीनामा भेजा है. तो अभी पवार साहब बोले कि निर्णय अच्छा होगा. We have Vidya Chavan ji with us. You tell us, Sharad Pawar ji was speaking to the party workers saying that we are going to consider the emotions of the party workers before he decides. How do you look at it? You have been a senior NCP leader as well. हमें बहुत खुशी हुई कि साहब ने आज कहा कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करूंगा और आपको इस तरह से बैठने नहीं दूंगा. यानी मुझे लगता है कि पवार साहब ने, क्योंकि बहुत बड़े पत्रकार मधुकर भावे जी भी महाराष्ट्र के जो है, उन्होंने भी साहब को रिक्वेस्ट किए कि आपके सारे कार्यक्रम आप सामाजिक कार्यक्रम बंद करके, चुनाव है ये 1.5 सालों में, तो उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए. और जब तक ये 16 महीने सिर्फ चुनाव को देखते हुए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, तो चुनाव को देखते हुए ही शरद पवार जी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, ऐसा आपको लगता है? पवार साहब ने ये कभी भी नहीं कहा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने वाले, ऐसा नहीं बोला है. उन्होंने कहा है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूंगा, लेकिन अध्यक्ष पद से मैं दूर रहना चाहता हूं. लेकिन कार्यकर्ताओं का आग्रह और पूरे महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनका यही आग्रह था कि साहब ने अभी ये गलत समय चुना है. चुनाव के बाद इसके बारे में सोचा जाएगा, और अगर कोई चाहिए तो साहब उसको कार्याध्यक्ष बना सकते हैं, और कार्याध्यक्ष के लिए हमें कोई उसमें ये नहीं. So this is what we've been speaking about also, Siddharth. The high possibility is that Sharad Pawar remains the top boss of the NCP, and a working president can be appointed under him, somebody who handles the day-to-day work. But Sharad Pawar's contribution in the 2024 Lok Sabha elections is
what is been spoken by all the NCP leaders who have assembled over here. Here she was Vidya Chavan as well, a senior NCP leader who has led the NCP women's wing also. She is also saying that there is a high possibility that Sharad Pawar will reconsider his resignation. That is what he has conveyed to the party workers as well. आप बताएं, शरद पवार जी ने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला है कि आपके भावनाओं का इज्जत किया जाएगा, उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे. आपको ये कितना अच्छा लगा ये सुन के? हमें तो बहुत अच्छा लगा. साहब ने हमें विश्वास दिलाया है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है ये 2 दिन में निर्णय हो जाएगा. आप अपना निर्णय पीछे लेंगे. आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप कहां से आए हो ये भी बताएं, क्योंकि शरद पवार जी ने इसके बारे में भी बताया कि आप लोग दूर दूर से आए हो, भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हो, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हो. इसके आपका जो इमोशंस है, आपका जो प्ली है, उसको ध्यान रखा जाएगा. यूपी से हम न्यू मुंबई से आए हुए हैं. मैं यूपी से. हाँ, बोलो. मैं यूपी से आया हूँ. पवार साहब ये निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिए और कार्यकर्ताओं के दबाव से निर्णय वापस होगा. पवार साहब फिर से अध्यक्ष बनेंगे और पूरे यूपी ने, पूरे देश में पवार साहब की जरूरत है. आप यूपी से हो. यूपी को एक पॉलिटिकली बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट माना जाता है. सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स 80 सीट यूपी से आती है. पवार जी का क्या महत्व होता है नेशनल पॉलिटिक्स में, उसके बारे में? पवार साहब का राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ा भूमिका है, खास करके यूपी में. मुलायम सिंह के न रहने पे अखिलेश को पवार साहब की बहुत जरूरत है. और इस समय यूपी के राजनीति में पवार साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुलायम सिंह भी नहीं है. स्वर्गीय मुलायम सिंह के न रहने इस समय अखिलेश जी को, पवार साहब को पीछे से बैकअप की जरूरत है और इसलिए पवार साहब ये निर्णय वापस लेना ही पड़ेगा. और भी जो राजनीतिक दल है. So this is what has been repeatedly stressed by the party workers, the party leaders, and to a very large extent by some of the senior journalists in Maharashtra as well, who have been speaking to Sharad Pawar. They have been former journalists, beg your pardon. They have also told Sharad Pawar that before the 2024 elections, his role can be very vital. That is what Vidya Chavan was also speaking sometime back, saying that he can play a very crucial role in unifying the opposition, and that is why he should consider on his retirement. We'll speak to some of the other party workers of the Arunil, Pawar of course saying that he'll take a decision that will not disappoint his supporters. So we'll wait and see what that decision finally is by tomorrow evening. But we have to shift our attention